हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीजीटी एसएसटी के सोशल साइंस के पेपर को। केवीएस एनवीएस टीजीटी एसएसटी के पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी, तो पूरे वीडियोस को जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम पोटेंशियल liability into productive national asset? So this the right answer is human capital investment. आप देखेंगे और भी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो लार्ज पॉपुलेशन कब एसेट बनेगा? जब एक कंट्री इन्वेस्ट करेगा इन पीपल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग, राइट। इसको तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बिना तो पॉपुलेशन में स्ट्रगल टू फाइंड वर्क एंड कंट्रीब्यूट, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. which dimensions of food security ensures that every individual has sufficient money to buy safe and nutritious फूड? भैया सबके पास एक्सेसिबिलिटी रहनी चाहिए। सो फॉर दिस आई मीन सॉरी, सबके पास अफोर्डेबिलिटी रहनी चाहिए, पार्डन मी, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, अफोर्डेबिलिटी। लेट्स मूव, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Why does GDP calculation include only the value of final good? This is because to avoid the double counting of the the value of intermediate good. So avoid the double counting. So for this is the question number 3. 2 is the right answer. Okay, let's move. We have question number 4, and where we have to read about the Abdul's owns a small furniture shop. He deposit 1 lakh as savings. Okay, so for question number 4, the right answer is 2, right. The bank helps in the capital formation, right, by accepting deposit and lending for productive activities. ठीक है, and this is the right answer. Let's move, we have question number 5. So we have to we have given two statement, and the first statement, and this is about functions of money and as a medium of exchange. Okay, so for this, the statement 1 is money as a medium of exchange act as an intermediate in the exchange process, and the statement B is the money as a medium of exchange. Okay, so both those statements are actually correct, dosto. And for the question number 5, A is the right answer. Okay, let's move, we have question number 6. This is the nice question, that this due process of law and the procedure established by law, right. So for the question number 6, the right answer is, okay, so for this the right answer is 2. ठीक है, this is the right answer. It reflects a shift from legislative supremacy to judicial scrutiny for reasonable fairness, right. Initially Indian Supreme Court allowed a narrow interpretation, right, जहाँ पे हम लोग सिर्फ देखते थे लॉ पास्ड है नहीं है, बस उतना ही वी वे आर चेकिंग, राइट। बट अभी now we are, after this Menka Gandhi case took place in 1978, the court shifted towards the due process, meaning it now checks if the law is itself just fair and reasonable or not. So इसका right answer क्वेश्चन नंबर 6 का 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इनटू फंडामेंटल राइट indicates recognition that, so this is basically effective exercise of democratic freedom depend on enabling social conditions. So this is the right answer, 7 ka 3. Let's move, we have question number 8. The expanding scope of rights mostly strongly challenges which traditional assumption? So for the question number 8, directive principles are non-justiciable. This is the right answer. We know about the DPSP, right. And this traditional DPSP were considered as non-justiciable, couldn't be enforced by a court. However, by expanding this right to life, article 21, the judiciary has effectively made many DPSPs like right to clean environment or right to health enforceable, right. ठीक है, let's move, we have the question number 9. This is basically about Sri Lanka's early post independence, ठीक है, constitutional choices that frequently interpreted as an example of, okay, this is basically majoritarian nation building through linguistic and religious. Okay, so for this question number 9, 2 is the right answer, dosto, and we will go with the option number 2. Okay, 2 is the right answer. Let's move, we have question number 10, and for question number 10 we have the option for question number 10, which of the following statement about apartheid system in the context of South Africa is incorrect? Okay, for question number 10, so this is basically, it was practiced only against the black natives. So this is the right answer for this. Let's move, we have question number 11. So which of the following, oh my god, this is the good question. Food security, access through food through the entitlements, none other than the Amartya Sen, right. This is the right answer. Okay, so
Great economic stuff all the time. Let's move. We have question number 12. So for this question number 12, right, so this is question number 12, and we know that 2400 calories we require in rural areas and 2100 calories we require in urban areas. So this is done question number 12. Let's move. We have question number 13, where we have to read this statement about the development goals of two different people and choose from the correct option. Okay, so we have person A, prosperous farmer. I want a guarantee that government will always buy my wheat at high MSP, and I also want a new tractor. Okay, then we have person B, a landless agriculture level. I want there to be more. Okay, perfect. So for this question, the right answer is 3, because किसी के लिए development, it is very good, right, but at the same time it can be disadvantage to certain person, right? So development is quite subjective. So correct answer is that shows the development for one may not be the development for another, and their goals, it could be conflicting. So this the right answer. Let's move. We have question number 14. The World Bank uses per capita income as the main criteria to classify countries. A major limitation is okay, this can hide disparities in income distribution. So for this the correct answer is 3, right? Let's move. We have this question number. This is, without reading the following removing barriers LPG. We know that this took place during PV Narasimha Rao, right? Liberalization refers to basically loosening of government regulations in right regulations in India. It took place in 1991. India adopted this policy during PV Narasimha Rao to allow private players and foreign companies to trade and invest more easily, and this ended the license raj. All right, let's move. Question number 16. If a union government program is challenged in court, that this illustrate that a major policy decision in India. Okay, so for this the right answer is may enter the judicial domain. So this the right answer for this, dosto. Let's move. We have question number 17. A major economic reform framed by the cabinet faces resistance. Okay, from a coalition parties in the parliament. The situation highlights the policy decision in parliamentary democracy are shaped by. Okay, so for this the right answer is a political negotiation within the legislature. This is the right answer. And then we have question number 18. The term horizontal accountability in the context of policy decision implies. Okay, so for this question number 18, dosto, horizontal. Okay, this is talking about the checks and balances system, right? Horizontal का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन एक ही लेवल पे रहे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों, और वो दे कीप आई ऑन each other to prevent anyone branch from becoming too powerful. This is about checks and balances, right? So for this the right answer is 2. ठीक है. Okay, let's move. We have question number 19, and this is about which of the following situations best illustrate absence of right in the political system. So for this, the right answer is a person is arrested without being given a reason. Okay, this is the right answer, and we know that one of the most fundamental right in any democracy is right to liberty, है ना? तो दिस इंक्लूड द राइट टू नो द ग्राउंड, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, लीगल काउंसिल को मुझे बुलाना है, उनसे बात करना है, या स्टेट, नहीं तो स्टेट किसी को भी उठाएगा और डाल देगा जेल में विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. इट शोज अ टोटल ब्रेक डाउन, राइट? सो दिस द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे 2 है, ठीक है, ठीक है, 2 है ना? अ पर्सन अरेस्टेड, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है. 2 will delete ऐसे लगेगा. We have pick something else. Okay, so 2 is the right answer for this. Let's move. ठीक है, question number 19, 2 done. Then we have 20. In a constitutional democracy, rights are often described as a counter-majoritarian. Which situation best captures this idea? So this is basically the term counter-majoritarian is basically the role of right in protecting the individual or minority from the tyranny of majority. ठीक है, so for this a court invalidate a law supported by overwhelming parliamentary majority because it violates freedom of speech. So this is the right answer for this. Let's move. We have question number 21. Which of the following option is correct? So question number 21 के अंदर है सबसे पहले democracy promote dignity, बिल्कुल ठीक बात है, and democracy strengthen the claims of disadvantaged groups for equal status, बिल्कुल ठीक बात है. This is the correct answer for this. ठीक है, this is the correct answer 21 का 2.
Let's move. 22nd, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू नेगोशिएट कॉन्फ्लिक्ट। भैया सप्रेस तो नहीं करेगा, ठीक है। 22 का इफ वी सी तो ए फॉल्स हो जाएगा, बी इज ट्रू, दिस द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव, वी हैव 23 जुडिशियल रिव्यू का मतलब अपने को बताना है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली होता है जुडिशियरी का पावर, द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट का पावर, तो वो एग्जामिन करते हैं लॉ जो भी पार्लियामेंट बनाती है और उनके ऊपर एक्शंस होता है, राइट। एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द लॉ violates the constitution, the court can declare it null and void. So this is the right answer इसका 2 number, ठीक है। Let's move, and we have then this opinion of Rajya Sabha and Lok Sabha differ regarding an ordinary bill. तो joint sitting कर लो, right? So we have joint sitting option over here. We have joint sitting, and then this is the right answer. A joint session is conducted, right? We know that a joint sitting under Article 108, ठीक है, अंडर आर्टिकल 108 joint sitting is possible in a case of ordinary bill. President can call a joint sitting under article 108, ठीक है। In this meeting members of both houses vote together. Since the Lok Sabha has more members, you know, it will usually prevail the final count, but anyway, this is article 108, and this was the answer for question number 24, a joint session, that was third, right? Let's move, ठीक है। So for this, सबसे पहले रिट को मिलाते हैं। रिट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग दिस, ठीक है। समन क्या है, बुलाओ किसी को, है ना, यू नो, बी प्रेजेंट, सो ये वाला एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। सो कौन सा मैच कर सकते हैं 25 का? सो फॉर दिस 25 द करेक्ट वुड बी समन इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। सो 1A to C, ठीक है, 1A to C, ठीक है। and this is the right answer for this, right? 25 ka. Let's move, we have then we have again question on human capital leads to higher income and productivity. This is possible because, why it is possible? Because of, okay, so this is because of investment in education, you know, for all. So this and training in both in, this is the right answer for this. Let's move, ठीक है। We have question number 27 in the picture, which is of which of the following statement correctly identify the educational indicators used in the National Multidimensional Poverty Index? Okay, so years of a schooling and this attendance is right in the educational indicators are there. Then we have question number 28, which of the following are the components of human capital? ह्यूमन कैपिटल सारे ही हैं ये तो कंपोनेंट है ना, ए बी सी डी विदाउट एनी डाउट। 28 का 4। लेट्स मूव, वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, अ फार्मर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन देन नॉन मार्केट, ठीक है। खुद का खाने के लिए है तो नॉन मार्केट, एंड अगर वो बेच रहा है, सेलिंग है, तो मार्केट, ठीक है। Then we have question number 30, which of the following is tertiary? इसका आंसर है tourism. We know there is primary, tertiary, primary, secondary and tertiary. यहाँ पे mining आ जाएगा, right? Mining आ जाएगा, over here we have, I'm so sorry, mining आ जाएगा, यहाँ पे forestry आएगा, ठीक है, and यहाँ पे we have tourism, right? So this is the right answer, tourism, for question number 30. Let's move, we have question number 31, and question number 31 में acquire the legitimacy for the revolt, भैया ये जाएंगे बहादुर शाह जफर के पास और उनको अपना लीडर मान लेंगे, ठीक है। एंड in 1857 we know that rebels needed a central authority to unite the various local, you know, local movements, and so they proclaimed this Bahadur Shah Jafar as their leader, and they gained a symbol of, you know, traditional sovereignty and legitimacy, which basically helped to transform a military mutiny into, you know, border national uprising, you know, broader national uprising. So this 31 ka the right answer of 31 is 3, right? बहादुर शाह जफर 1857 काफी फेमस है, रिवोल्ट, है ना, और काफी, यू नो, दिस इज इम्पोर्टेंट।
And then we have question number 32. What were the demands of 1848 revolution that was led by highly educated middle class in German region? So भैया उनको एक establish करना था नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री रूल, इसीलिए 1848 के अंदर वो क्या करेंगे, 1848 में वो जर्मनी में यूनाइट होंगे और यूनिफिकेशन और नेशनलिज्म के लिए जो लिबरल मिडिल क्लास रहेगा वो यूनिफिकेशन होगा उनका, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एम करेंगे वो, और दे विल गैदर एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, and they'll demand the civil liberties like freedom of press and association rather than this radical socialist state. So this is the right answer for this. Let's move. We have question number 33. Nature of nationalism changed in Europe in the last quarter of the 19th century. Which of the following regions explain the above statement at best? So for question number 33, the right answer is 2. It became narrow group of intolerant nationalists that were ready to go for a war. Let's move. We have question number 34. The justification given by the colonizers to clear forest. Oh my god, these colonizers, they'll give something, Okay. So for this is the right answer. Make the forest productive, meet the increasing demand of raw materials. So this is the right answer. Let's move. This pastoral community Raikas, okay, Raikas, okay. So this is basically from Rajasthan, right? This pastoral community, and this people will come in a dry season. ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसका, है ना? तो राजस्थान के हैं और ड्राई सीजन में आएंगे, ठीक है। मानसून के टाइम में घर में रहेंगे वो, क्योंकि फॉरेज और वाटर जो है उनको अवेलेबल रहता है, लेकिन अक्टूबर के टाइम में जब ड्राई सीजन स्टार्ट होगा तो ये लोकल जो पास्चर्स होगा वो एग्जॉस्ट होगा, इसलिए वो माइग्रेट करेंगे हरियाणा और मध्य प्रदेश में ग्रीनरी ऑफ देयर हर्ड्स उसके लिए, ठीक है। लेट्स मूव। वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट सोन एरिया, ठीक है, into 100. So this is the right answer for this question number 36 ka 2. Then we have question number 37. Which of the following soil gets the color from the white diffusion iron in crystalline metal? This is red soil. Okay, this is the red soil. Which of the following soils gets its color from white diffusion of iron in crystalline metamorphic rock? This is the red soil, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट रेड सॉइल डेवलप करता है क्रिस्टलाइन इग्निशियर रॉक्स के इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेडिश कलर का होता है फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन दिस रॉक्स, एंड सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो येलो हो जाएगा जब वो हाइड्रेटेड रहेगा, मतलब उसमें वाटर रहेगा तो, ठीक है। लेट्स मूव। वी हैव क्वेश्चन नंबर 38. Which year is known as the year of democratic divide? बिल्कुल ठीक है, 1921. This year is called the year of democratic divide. Let's move. We have question number 39. Coming to the picture, which when a geographer looks for evidences of, पता नहीं कितने ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिए हैं, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, द शोर लाइन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हैज अ रिमार्केबल मैच। दिस इज वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। लेट्स मूव। वी हैव क्वेश्चन नंबर 40 into the picture. Farmer is planning to start a plantation of aloe vera tract specifically between Chenab and Jhelum. Okay, then Chenab and Jhelum is such, ओके अगर अपने को मान लो ये तो चार्ज हो गया चेनाब और झेलम का, अगर रचना है तो रचना इज राबी एंड देन प्लस चेनाब, ठीक है। चार्ज इज बेसिकली चेनाब एंड झेलम, चेनाब प्लस झेलम, राइट, एंड बारी इज व्हाट, बारी इज ब्यास प्लस राबी, एंड वेस्ट इज व्हाट, वेस्ट इज बेसिकली ब्यास प्लस सतलज, ठीक है। Let's move. Next question. If Assis is standing at Greenwich in London at 12 noon, okay, which of the following city in India is aligned with IST? Okay, so this is 5:30 p.m. at Itanagar, ठीक है। So this is the right answer for this. Let's move. We have question number 42. Which of the following is correct in the context of earthquake waves? Okay, so earthquake waves, primary waves are okay. So for this question number 42, this is the right, ठीक है, क्योंकि we know the p waves can travel through solid, liquid and gases while they are refracted by the earth's core, they reappear at the distances greater than this 145 degree, right? So this is the right answer. So for this
And this the correct answer is 3, right? So this is the correct answer, 3 है ना? Let's move, ठीक से मार्क कर देता हूँ, then it is easy to understand for question number 42. This is the right answer. Let's move. Which of the following, question number 44 पे चलते हैं, which of the following statement is correct in the context of motions of earth, right? So for question number 43, the right answer is inclination of the earth to the plane of the ecliptic at an angle of 66.5 degrees. So this is the right answer for this dosto. Let's move. We have question number 44. Which of the following statement is correct in the context of physical features? Okay, the Peninsula Platea is composed of igneous and metamorphic rocks. Okay, this is correct. The average height of Himadri is 6,000 meters and the wide. Okay, दोस्तों इसमें से 2 अपने को I guess 2 is not correct. ठीक है, why? Because this is not correct. Why? Because this is 400 kilometer in Kashmir. This is 400 and this is 150. ठीक है, 2 अपने को इससे निकाल देना है. अगर हम लोग जैसे ही 2 निकालेंगे, we would be left with 1 and 3. ठीक है, let's move. We have which of the following statement is correct in context of Buxa Tiger Reserve. ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो अपने को बताना है. तो बक्सा टाइगर रिजर्व बेसिकली 1983 में बना था. ठीक है, क्रूशियल हैबिटेट है, माइग्रेटरी कॉरिडोर है एशियन एलिफेंट के लिए. ठीक बात है. It is the distribute also well known for ecological damage caused by dolomite mining which was distributed. Okay, perfect दोस्तों. एंड ये जो है बक्सा, ये मध्य प्रदेश में नहीं है ना, ये वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व. ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये है और ये मध्य प्रदेश में नहीं है. और वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा that would be the question. This is the right answer, option number 4. Let's move. We have 46. Why did British government invite Dietrich Brandis to India in 18? So for this Dietrich Brandis को क्यों भारत बुलाया? So for this the right answer is to train people in the conservation. So this the right answer, to train people in conservation. Let's move. We have archaeologists found evidence in the plow. Okay, Indus Valley civilization का question है. So 47 का, okay, they cultivated 2 different crops simultaneously. Yeah, so this presence of 2 sets of furrows, right, crossing at right angles in a this is a basically classic archaeological indication of intercropping. ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि बेसिकली हड़प्पन काफी एडवांस थे, इनफ था उनके पास टू ग्रो 2 डिफरेंट क्रॉप जैसे मस्टर्ड और चिकपीस वगैरह. ठीक है, सो फॉर दिस 47 वी हैव this 2 is the right answer. Okay, let's move. We have 48. है ना, how did socio-economic condition of Indian countryside impact the mindset? सच बताऊं तो सिपाहीज they were also from the normal peasant class family itself. So ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहीज थे वो बेसिकली इनको कनेक्ट था उन फैमिलीज से, क्योंकि वो खुद ही उस जगह से आते थे. they were mostly recruited from the peasant families in the areas like Awadh. When the British imposed this high taxes and harsh revenue on this farmer that ruined the farmer's life, the sepoys actually felt the pain of their families, so their shared a grievance was a major factor of revolt. So for this the right answer is undoubtedly most sepoys were peasant in uniform whose family lived in village. Okay, let's move. We have question number 49. Why did महात्मा गांधी सॉल्ट क्यों चूज किया उन्होंने? क्योंकि ये बेसिकली सभी लोगों की जरूरत थी और ये इसके थ्रू गांधी जी यूनाइट करना चाहते थे, क्योंकि सॉल्ट जो था एक एसेंशियल फूड था, वो यूज किया जाता था गरीब के द्वारा भी अमीर के द्वारा भी, राइट. सो बाय चूजिंग सॉल्ट गांधी जी ने टच किया कॉर्ड ऑफ एवरी सिंगल इंडियन, रिगार्डलेस वो कौन सा कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एक लोकल प्रोटेस्ट को एक मैसिव नेशनल मूवमेंट में. सो फॉर दिस द राइट आंसर इज 2. लेट्स मूव. वी हैव क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट वाज द प्राइमरी काउज फॉर द फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन इंडियन वीवर एंड गोमास्तास in the late 18th centuries? Okay, so this Gomastas were the paid servant of East India Company. ठीक है, they were outsider who often behaved arrogantly, punished weavers for delay and showed no empathy for their
living condition leading to this, intense condition. So for this the right answer is this. ठीक है, let's move. We have question number 51. Which of the following evidences have been used by archaeologists to reconstruct dietary practices due to Harappan civilization? 51 का है, ठीक है. So for this the 51, the right answer is the again this is 4 ABC is the right answer. ठीक है, this all are correct basically, है ना, these are evidences. ठीक है, anyway let's move. This again question we have from the Vijayanagar Empire. ठीक है, तो this is the right answer. अगर अपन origin को track करेंगे दोस्तों, so अगर starting बताऊं, so Sangama will rule around 1336 to 1485. Saluva will come around 1485 to 1505, and this people's Tuluva people, this will come around 1491 to 1517, and इसी से कृष्ण देव राय आएंगे, है ना, कृष्ण देव राय. सो ये होगा, एंड लास्ट वाला तो अपने को है ही, है ना. सो लास्ट वाला, द लास्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड after the battle of Talikota, this was Arimedu, है ना, Arivedu, and this is 1570 to 1646, right? So this was the explanation, short explanation. Which of the following newspaper was published? Oh my god, this is one of the greatest person in human history, Raja Ram Mohan Roy, and the famous Samvad Kumari, right? So ये था, आप लोग इनके बारे में जितना मैं बोलूँ, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. सो संवाद कुमुड़ी बेसिकली एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था. राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय ने इसका यूज किया एज अ प्लेटफॉर्म टू कैंपेन अगेंस्ट सोशल इवल्स लाइक सती, टू प्रमोट विडो रिमैरेज एंड फीमेल एजुकेशन, है ना. सो ये थी. लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन था ये बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 54. इन रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर नेशन वाइड सत्याग्रह, ब्रूटल क्रैकडाउन, एजिटेशन लेड अप्रैल 3 जलियांवाला मैसेकर, राइट, जलियांवाला बाग इन अमृतसर. So this is the right answer. On the Baisakhi Day in 1919, पीसफुल क्राउड जो थे वो सैफुद्दीन किचलू और उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अरेस्ट का, तो जनरल डायर जो था वो ब्लॉक किया एग्जिट को, और उसके बाद ordered his troops to open fire on the unarmed crowd, and even that became a major turning point in the Indian freedom struggle. Okay, let's move. We have question number 54. How did understanding of Swaraj differ from plantation workers in Assam during the non-cooperation movement compared to the middle class towns? So for this the right answer is the freedom to move freely. Okay, the freedom to move freely, this is the right answer for question number 55. Then we have question number 56. Which of the following is not correct about the pressure and the wind conditions? Okay, atmosphere or climate wala part hai. So for this the one is incorrect, right? Because यहाँ पे लिखा हुआ during winter there is a low pressure. No, this is high pressure. ठीक है, one is incorrect, and this is correct. 2 is correct, and India lies, this is also correct. ठीक है, and this is incorrect. This is given Coriolis force, ये Ferrell's law है. ठीक है, तो ये incorrect हो जाएगा. 2 3 अपने को correct मिला है ना. and then we have this option incorrect है ना. No, we have to do incorrect. 1 and 4 is incorrect into this is the right answer. 56 का 1. ठीक है, let's move. We have question number 57. Which of the following statement is correct in the context of population? ठीक है, context of population. ठीक है, statement 1 बिल्कुल ठीक है. The first complete census was held in 1881. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है ना. द फर्स्ट नॉन, अगर देखेंगे ना तो नॉन सिंक्रोनस सेंसस तो 1872 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट सिंक्रोनस जो सेंसस था वो 1881 में हुआ. 2 भी करेक्ट है. इन इंडिया पॉपुलेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस वर्किंग इन द 15 to ओके. सो फॉर दिस द राइट आंसर इज 2, 1 and 2. ठीक है,
लेट्स मूव, है ना। और ये 1952 नहीं है, 1950, आई मीन 1952 होना चाहिए, 1954 दिया था तो गलत हो जाएगा वो पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव, वी हैव क्वेश्चन नंबर 58। In the picture, if a submarine moves from the coast towards the deep ocean में जा रहा है, ओके, सीक्वेंस रिलीफ फीचर्स के सीक्वेंस क्या होगा, तो डीप ओशन ट्रेंचेस में जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज एंड देन डीप ओशनिंग ट्रेंचेस, राइट। 58 इज डन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशनिंग ट्रेंचेस, राइट। लेट्स मूव, वी हैव क्वेश्चन नंबर 59 एंड इसको अपने को अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ में। तो सबसे नॉर्थ तो ये है राजस्थान, बाकी तीनों जो है अपने को साउथ में है, तो वो कंफ्यूजन करेगा अपने को क्रिएट। तो ये राजस्थान के अंदर है, और कौन से रिवर पे है, तो ये दिस इज ऑन द रिवर, राइट, राणा प्रताप सागर, दिस इज ऑन चंबल रिवर, राइट। और दिस इज ऑन चंबल रिवर। तो फोर जो है नॉर्थ साइड में है, तो सबसे एक्सट्रीम में फोर ऑप्शन है, तो अपने पास दो ऑप्शन है, ये और ये, बट दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, वाई, बिकॉज जो कृष्ण सागर है वो कर्नाटका के अंदर है, कावेरी में है, ये साउदर्न मोस्ट है कृष्ण सागर, राइट, दिस इज द साउदर्न मोस्ट, ठीक है, कृष्ण सागर, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कावेरी रिवर, ठीक है। एंड निजाम सागर कहाँ पे, ये मंजीरा रिवर के ऊपर है ना, मंजीरा काफी फेमस रिवर है तेलंगाना के अंदर की, राइट। एंड देन वी हैव नागार्जुन सागर, दिस इज लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा, राइट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, let's move, we have the last question, in which of the following state the major oil field is located, this the Assam is the right answer. Assam is the oldest oil producing state in India, major oil field like Digboy is there, right, Naharkatia and Moran, these are located there. While Rajasthan has significant oil fields today, Assam remains the classic primary answer for major oil field. So this was the whole explanation of your questions which has been asked in TGT SST, right? I hope you have enjoyed the video. आपने अपना आंसर मैच किया होगा. Thank you for watching the video. Thank you very much.